अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में जो विनय भाई ने कल ट्विटर पे शेयर किया था। आज उसके अपन एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। वो ये था कि वाई क्लीन मूव्स हैपन व्हेन इंडेक्सेस इज अबाउट ट्रेंडिंग अबाउट 10 20 एंड 50 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। और सबसे ज़्यादा स्टॉक्स ब्रेकआउट मिडिल ऑफ द रैली में क्यों देते हैं, ठीक है। और अपने को बॉटम कैच करना क्यों डेंजरस है, और पोजीशन साइजिंग के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहली चीज़ के अपन स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ये देखो मार्च 25 से जुलाई 25 का ये चार्ट मैंने ओपन कर रहा हूँ। आप देखोगे इंडेक्स यहाँ पर बॉटम बनाया था। दिस वॉज टैरिफ न्यूज, सो इग्नोर दिस। इंडेक्स मेड अ बॉटम हियर एंड डिड अ क्लीन अप ट्रेंड। इट वाज इन अप ट्रेंड, वुडंट से क्लीन बट इट वाज इन अप ट्रेंड। अगर आप यहाँ देखोगे इस लेग अप में, इस रैली में और इस रैली में अगर आप स्टॉक्स को देखोगे, सो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स वर बॉटम बाउंसर्स। कोई यहाँ पर ब्रेकआउट्स नहीं हो रहा था एंड नथिंग वॉज वर्किंग, ओनली बॉटम बाउंसर्स, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग ऑल्सो कि यहाँ पर ही क्यों ये जो रैली थी हेल्दी क्यों थी, आज अभी अपन इसको देखेंगे स्टॉक्स की मदद से, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे जोटा हेल्थ केयर, दिस वॉज मेकिंग अ बेस। यहाँ पर इंडेक्सेस ने स्ट्रेंथ दिखाई और देन स्टॉक क्विकली केम अबव द हाई, ओके। फिर यहाँ पर अगेन एक और बेस बना, यहाँ से देखो क्लीन अप मूव दिया है। ये मैं जो ये मूव है क्लीन अप मूव, मैं उन्हीं को मार्क कर रहा हूँ जहाँ पर अपने को एंट्री मिल सकती थी। यहाँ पे एक एंट्री मिल सकती थी। सो आप देखोगे ये जो क्लीन अप मूव था स्ट्रेट, दिस हैपेंड हियर वाइल वी वर इन द मिडल ऑफ द ट्रेंड। सो दिस वॉज वन एग्जाम्पल, ठीक है। देन अनदर वन लॉयड एंटरप्राइजेस, लुक एट दिस वॉज मेकिंग अ बेस एंड हायर लो वाइल इंडेक्स वॉज गोइंग अप। दिस वॉज मेकिंग अ बेस एंड लुक एट दिस क्लीन मूव, this clean move of how much, 30 40 50%. This happened, look at this, from where this happened, from middle of the trend, ठीक है। this doesn't happen here, it only happens in the middle of the trend. Why? Because many fund ownership, institutional ownership and many HNI starts to participate in the rally when we are in the middle of the trend. They do not try to bring in their hundreds of crores of money trying to find the bottom. They only come into the market while we are above key moving averages, while we are trending up, okay. This is why this clean breakouts happen in the middle of the rallies, okay. Another one, I don't know why this happens, but yeah, Aditya Birla Capital again making a higher high, made the base, and look at this clean move. This happened here middle of the rally while the indexes were consolidating. Same thing, Q Power. It came near the highs, okay. And look at this clean up, 100% move happened here from the middle of the rally to the end of the rally, ठीक है। Same thing, Reliance Power, this 67% rally happened from middle. Look at this. अगेन GRSE यहाँ पर एक अप ट्रेंड में था, एक क्लियर यहाँ, मतलब देखो कोई अच्छा सा उतना क्लीन नहीं था लेकिन एक बेस बना रहा था हायर हाई का। देन अगेन यहाँ EP हुआ, फ्लैग बनाया, लुक एट दिस क्लीन मूव। दिस क्लीन मूव हैपेंड हियर इन द मिडल ऑफ द रैली। सेम थिंग हैपेंड इन हियर, लुक एट दिस हाउ क्लीन दिस मूव्स इज, लुक एट द वॉल्यूम हाउ क्लीन दैट इज। दिस हैपेंड हियर, देख लो कितना लेट हुआ है रैली में। दिस शोज दैट कि डोंट ट्राई टू कैच द बॉटम, ओके। बॉटम कैच करने जाओगे आपके हाथ जल जाएंगे, यू विल लूज सो मच ऑफ योर मनी। वेट फॉर द क्लियर ट्रेंड अप, वेट फॉर द इंडेक्सेस टू मूव अप, शो लेट देम शो द रियल स्ट्रेंथ, देन ट्राई टू कम इन टू द मार्केट, ठीक है। सेम विथ फोर्स मोटर, दिस वॉज अ विनर ऑफ दिस March to July market. It moved more than 100%, okay. Look at this clean move of 100%. It happened here from middle of the rally to the end of the rally. It didn't happen here while indexes were consolidating near the lows, okay. It was making higher lows but it wasn't a rally, okay. Same thing Cupid, while the indexes were going up, it made a strong trend. Then again it made a base and look at this clean breakout. It happened from here middle of the rally. Same thing with coaching, clean up move, made a base, then breakout. Look at this, it happened here. Same thing Cartrade, look at this. Cartrade is a perfect example of a laggard,
ठीक है. It moved I think more than 60-70%. While the index were going up, this was still basing. ठीक है. And then when it broke out of this trend, look at where the index were. We were consolidating. Okay, we weren't going much higher. We were started to go down, and then the stock just clearly showing relative strength and moved up. ठीक है. This shows that leader doesn't always move first. They might be laggards. They might move in the middle of the rally. ठीक है. Same thing Camlin Fine Science. Look at this clean move happened here. SML Shizu 100% up move happened here, middle of the end of the rally, near the end of the rally. This was from March to July, na? Yeah. This was another one I made from here, November to December 24, while indexes were pushing up much higher. They were trading about 10, 20, and 50 moving average. Okay, look at the stocks. Jindal Polyfilms, strong move, clean move happened here only when we were above moving averages. Okay, again Dixon, clean move happened when we were above. Same thing TI, same thing in this one. Look at this. This strong move happened. The stock was showing relative strength while the index were down. And look at this. We were above, the index were above moving averages, and the index started to slow down. Slow down means more like a consolidation, but the stock kept going higher and higher. This is a perfect example of a laggard stock. Like sometimes the stock might move at the end of this rally. Okay, so try to look for them. Another one, this one. Look at this clean flag base and breakout. This happened here. Okay, another one. Look at this clean move happened here when we were above moving averages. Same thing in this. सो वॉट लर्निंग यही मिलती है कि अपने को ट्रेड व्हेन वी आर अबव मूविंग एवरेजेस एंड द ट्रेंड इज हायर. ओके, मोस्ट स्टॉक्स ब्रेकआउट इन द मिडिल ऑफ द रैली. अभी तो मतलब दिस वर सम ऑफ द एग्जांपल्स. देयर आर मेनी स्टॉक्स विच ब्रोक आउट इन द मिडिल ऑफ द रैली. यू कैन ट्राई एंड फाइंड दैट फॉर योर सेल्फ. ओके, और दिस इज़ वाई कैचिंग द बॉटम इज डेंजरस, बिकॉज अगर आप बॉटम कैच करने जाओगे तो आपको हाथ जलेंगे, बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है उस समय. स्टॉक्स मूव्स ऑल ओवर द प्लेस. वो लोग प्रीवियसली लो को काटेंगे, एक बार नहीं 10 बार काटेंगे. सो देर इज़ नो पॉइंट ट्रेडिंग ट्राइंग टू कैच द बॉटम. ठीक है. सेम थिंग विथ पोजिशन साइजिंग यही है कि जब अपन ट्रेंड हायर कर रहे हैं, so you can literally play big, like you can deploy 30, 40, 50% of your account size in a stock and make so much enormous money while sitting out or taking like 10 or 5% size while when indexes are down or not trade. Okay, so this was the reasons ki why clean moves happen when index is trying trading above 10, 20 and 50. Okay, if you have any examples, do share. Okay, thank you. This was my point. Okay.